के 5-6 ओवर के दे आर वेरी साउथ अफ्रीकन लाइक कि एक्स्ट्रा बाउंस है और स्विंगिंग सीम भी है। और साउथ अफ्रीका का वो टेस्ट सीरीज सबको याद होगा जहाँ पे विराट कोहली वाज ऑन वन साइड और हमारे सारे बल्लेबाज ऑन द अदर साइड पूरे तरीके से डोमिनेट किया था उस टेस्ट सीरीज को। It felt like he was batting on another pitch altogether और इसी के साथ वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन Bartman. पेसर And बाटमैन। I think he has picked up a wicket on World Cup debut first ball. What a start. ये देखिए ड्रीम स्टार्ट इसी को कहते हैं। आपका पहला बॉल है वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री के लिए एंड आई डोंट थिंक यू वुड वांट एनीथिंग बेटर। But trust me, out of all the balls, that was the most trashiest ball to get a wicket. I mean, that was just pressure, man. He just reaped reward of what was done by Jansen and Rabada in the first 2 overs. I mean, that is T20 cricket, right? I mean, you might not be bowling the best ball to get a wicket, but congrats to Bartman for getting his first ever T20 World Cup wicket. And brilliant, man. I mean, happy for this guy and brilliant start. Sri Lanka a wicket down. That's going to add a lot more pressure onto the scorecard now. डेफिनेटली ऑलरेडी आपको दिख रहा है दोस्तों कि वो प्रेशर रिलीज के अटेम्प्ट में वहां पे पतुम निसांका ने अपना विकेट खोया और मैं मानता हूं कि यहाँ पे श्रीलंका ने Ideally speaking, Alan, in my opinion, I mean, Sri Lanka have to be slightly left field as well in terms of their choices in these kind of wickets. You can either send Angelo Mathews at 3 or Asaranga at 3. Why I say that is because, see, they have to break free, they have to do something different. If they're going to go by a set pattern, South Africa can run through you and without even you realizing it, you might be all out for 110 or maybe not even 100. Because that's the kind of wicket you have an offer. And so Sri Lanka hates playing in wickets which just for fast bowlers. No offense, but they're a very poor, technically gifted team to play fast bowlers. When ball moves around, Sri Lanka are nowhere there in the picture. Definitely. That is well said. Just excuse me, I'm getting a call. Yeah, sure. So yeah, Kamindu Mendes is here to bat, and there's a lot of things spoken about Kamindu Mendes as well because locally speaking, people resonate a lot with him, and he's got some of the flair of Sanat Jayasuriya apparently. So if you guys have watched Kamindu Mendes bat, aggressive player again, has got a lot of potential. Uh, I mean, he's got a very small T20 career to judge by, but domestically speaking, Kamindu Mendes is a big player. I mean, that's one of the reasons he's been interested at number 3. Can he come good today? I mean, it's always good to change around to bring a left hand, right hand combination, a wicket like this. Bartman has had a great start thus far, both 3 balls, 3 dots, including a wicket. Talking about which, guys, do comment down if whoever is watching how much can Sri Lanka score on this wicket? Because for me, I think 155 is a winning total on this wicket, provided that Sri Lanka bowls well as well. See, South Africa will fancy their chances to chase 155 because T20 cricket chasing is always easier. But 155 to 160 is what I believe should be ideal on this wicket. If you're scoring 170, it's an above par score. So Bartman has bowled well thus far. I mean, credits to him, man. I mean, he's really reaped reward of what Jansen has bowled. Jansen bowled outstanding. I mean, if you really wanted to watch some really good fast ball, that was Jansen. Yeah, I think Aaron is back. So I was just talking about Kamindu Mendes, how he's been a star of sorts in the domestic level in Sri Lanka. And he's really got a reputation, to really do well. Yes, that's right. कमिंदू एक ऐसा प्लेयर है जो एक्सपर्ट भी श्रीलंका से तो बहुत हाइप अप कर रहे हैं पर अदर कंट्री एक्सपर्ट्स हैव आल्सो पुट बैक्ड कमिंदू टू कम गुड और डेफिनेटली ये वर्ल्ड कप दोस्तों आपको इसी के लिए देखना है राइजिंग टैलेंट्स एंड स्टार्स फ्रॉम कंट्रीज जो आपने शायद प्लेयर्स को कभी देखना नहीं होगा सुना नहीं होगा। Yeah. तो ये वर्ल्ड कप इसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत मजा आने वाला है वर्ल्ड कप में। But if you look at the pitch as well, it's a lot of grass on the wicket, a lot of grass on the wicket, which is so South Africa like. I mean, South Africa will feel so much like they're playing at Johannesburg or in Durban. Like all of a sudden, they're like, you know what? This is what we are born and bred up on. Like Sri Lanka will be like, this is exactly the conditions we dreaded about coming to New York. So that's how it is at this point because you look at those wickets, you saw the ball which darted away, pitching on the grass. I mean, that shows how much of grass is there underneath as well. So if you're a fast bowler, like the Shaheen Shah Afridis and the Bumrahs, you're watching this game closely and be like, you know what? If you get a sniff of this kind of a pitch,
we are going to be in game throughout. It's going to be a bowling heaven. डेफिनेटली दोस्तों, ये अगर ऐसी, और मुझे क्या लग रहा है ना कि वेस्ट इंडीज के जो पिचेस रहेंगे वो वेस्ट इंडीज के पिचेस ही होंगे, स्लो होंगे, ज्यादा आपको अटैकिंग जो फ्लैट पिचेस है वो नहीं मिलेगा। पर यूएसए में हमको ये देखना है कि ये जो है इट्स ओपन, तो यहाँ पे कंडीशन, विंड डायरेक्शन भी एक बहुत बड़ा, क्या आप अगेंस्ट द विंड खेल रहे हो कि क्या आप विद द विंड खेल रहे हो। और आप देख रहे हो हाइलाइट्स में अभी कि कैसे उस बैक ऑफ द लेंस से बॉल हिल रही है, इधर भी हिल रही है उधर भी हिल रही है, एंड मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार दोस्तों इसको देख के। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और अभी लाइव पे मैंने क्वेश्चन डाला है कि क्या आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका 2 विकेट्स ले, मुझे तो लग रहा है कि जैसे श्रीलंका बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, द बॉल इज डूइंग सो मच, इट्स ओनली द बॉल दैट्स टॉकिंग एंड नॉट द बैट। और ये बहुत अच्छे साइंस है दोस्तों कि क्या लग रहा है आपको कि सेकंड विकेट गिरेगा श्रीलंका का? I mean, yeah, bro. I mean, second wicket is also not that far away. Looks like how Rabada has been bowling. And it's a T20 game at the end of the day. You don't have a lot of time to just play around the conditions. Fresh wicket, new ball. You're already 4 overs down. There's a power play which is ongoing. What more can you do? I mean, they're trying to swing the bat, but the ball is just going on top. I mean, it's just crazy. I mean, this would make an amazing test wicket. बिल्कुल बिल्कुल, एंड टू टॉप इट ऑफ दोस्तों, साउथ अफ्रीकन फील्डर्स भी नॉट गिविंग अवे एन इंच, पूरी तरीके से प्रेजेंट इन द मोमेंट है। और अभी तक आप देखेंगे जो टेलीविजन पे डाल रहे लेंस आप देखिए, तो कुछ 6 to 8 मीटर के लेंथ के बीच में ही उन्होंने मेजोरिटी अपने गेंद डाली, और वहां पे आपको सबसे ज्यादा परचेज मिलता है। और इसी के वजह से ये जो पिच है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है बहुत मजेदार होने वाला है। एंड साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी बहुत, उन्हें मुझे लग रहा है मजा आने वाला है इस पिच पे। एंड कंपैरिजन में एबल, श्रीलंका के Yeah, बॉलर्स ये वाले लेंथ ज्यादा नहीं डालते हैं, फुलर लेंथ डालने को वो प्रेफर करते हैं। great. हमने देखा पति राणा भी, अगर आप देखें तो उनका फॉर्टे आप कहोगे कि फुलर लेंथ है, पर जरूर वो बैक ऑफ द लेंथ और शॉर्ट वन भी डालते हैं, पर कंसिस्टेंटली वो लेंथ डालना थोड़ा मुश्किल होगा श्रीलंका के लिए यहाँ। Yeah, that's true. That's a very good point which you have made. I mean, in South Africa, this is a length you ball in South Africa as well to a large extent, right? Slightly on the 6 to 8 meter length. And South African bowlers are so used to bowling in these lengths. And South African batters will find comfortable batting with this bounce because they would have loved to have the ball coming on to them with that bounce because they're very good cutters and pullers of the ball. And that's why I think this game, I know it's early on in the game, but this is more like a South African very good shot. I mean, that's what we've been talking about. It's got that, it's got that flair. That flick was just it was just out of the run of the play, just not. If you look at the kind of balls we've had, Africa will take their chances a lot more in this game than Sri Lanka. Sri Lanka will feel like, we got the worst possible conditions we could have ever asked for. But whereas South Africa will feel this is the best way for us to go ahead. I mean, so South Africa playing a lot more games here, they will really love playing in these conditions. बिल्कुल, एंड दोस्तों फाइनली हमें एक बाउंड्री देखने मिला है पूरे इनिंग्स में, T20 क्रिकेट में 4 ऑलमोस्ट 5 ओवर हो गए, एंड फाइनली बाउंड्री एक कमांडिंग शॉट के साथ। इसी के लिए हम कह रहे थे दोनों के कमिंदू डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक सर्कल्स में बहुत बड़े नाम है श्रीलंका के लिए, एंड फाइनली वो थोड़ा अपना फ्लेयर दिखा रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और यही फ्लेयर और यही टैलेंट की बात एबिल भी कर रहे थे कि आपको अगर गेम को आगे बढ़ाना है, अगर स्कोर को आगे बढ़ाना है, तो यू नीड टू ब्रिंग सच प्लेयर्स इनटू द मिक्स। टॉप ऑर्डर में भी आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट का मंत्र क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी। सिचुएशन के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि भाई मैं प्लान ए लेके आया हूँ और मैं प्लान ए ही करूंगा, प्लान ए नहीं चला तो फिर मेरी दुनिया डूब गई, ऐसे नहीं होता है। I agree. I agree. I mean, also, Alan, one thing which we need to know here is how far can South Africa really push Sri Lanka here? How far they can push them to the wall is what I mean. Because yeah, obviously, they've been bowling really well, but at the same time, South Africa should also know they should be patient here. You know, not to lose what they're trying to do. Just stay patient because Sri Lanka is going to give away wickets.
and maybe try to push in a lot more paces. I mean, they would be very tempted to bring in a Keshav Maharaj at some stage, but try to use paces as much as possible and see how things go. See again, they ball great lengths for this pitch. It's so hard for Sri Lankan batters to drive from that length because if you look playing in subcontinent, you can stay and hit, right? You can play through the motions. But here, all of a sudden, the power game is not what you need. You need a lot more skill level. You need to be adaptable to know where to place the ball. See, power play is still on. There's 4 more balls to go. There's still 2 fielders outside a circle. That's why I think you should, have that adaptability. Just be patient. Ball is doing quite a bit. Once this power play gets over, maybe the ball gets slightly softer. You can do a lot more because you look at that ball which Bartman ball right now. It's pitching on off stump and jagging away. Proper test cricket level stuff. Nothing else. Yes, ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्या लेंथ डाल रहे हैं, वो ही लेंथ पे डाल रहे हैं एंड श्रीलंका के बैटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे खेले हम एंड बट फनीली इनफ दोस्तों श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीता है दैट आइकॉनिक टेस्ट सीरीज सबको याद है 2018 में Kushal, कुशाल Kushal परेरा का Pereira, yeah. 154 I mean, they यहाँ won that in the next game as well. Funnily enough, we all remember that game. But there's another game they won. They won that Test Series 2-0, if I'm not wrong. I mean, that's crazy. Yeah, I mean, to be honest, at this point, Sri Lanka can just say, you know what, we'll bide our time. Now, how often have you heard that word bide our time in T20 cricket? That's a brilliant ball from Bartman, but I think he'll miss the stumps because of the height. Yes, that's But true. yeah, I think you can't do much. You can't do much because this is not a T20 pitch at all. I mean, if I have to make a T20 pitch, this is so not a T20 pitch. See, Alan, I like having ballers friendly pitches, but this is a little too much for T20 cricket. बिल्कुल बिल्कुल सी एज ए T20 क्रिकेट फैन वे नॉट यूज्ड टू सीइंग बॉलर्स इतना डोमिनेट कर रहे हैं मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है और यहाँ पे फाइनली थोड़ा कुशाल मेंडिस को भी मुझे लग रहा है कि बोर हो गया कि भाई मैं क्रीज पे खड़े खड़े कितने बॉल प्लेयर फेस करूंगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पर 6 ओवर हो गए दोस्तों सिर्फ 24 रन और कहा हम एक ओवर में 24 रन दिखते थे so this is international cricket this is where the best come and play versus the best Yeah, if you have to be a world champion, you have to bite all conditions, and you're playing in 2 different countries. Different venues have different conditions and alien conditions. I mean, New York, nobody knows how it is going to play around the World Cup, right? Maybe come the India Pakistan game, you might get a different surface as well. So, yeah, which is great, I believe, in my opinion, for sport in general to see this kind of conditions. I mean, this is a real test. This is a good competition between bat and ball. I still believe a skilled batter can score runs here. I mean, it's just technically they've been exposed a lot more. As I keep saying, Sri Lanka's technique against pace bowling is way too below the belt in comparison with any other team. So Keshav Maharaj is here to bowl. This is actually interesting because this is going to be Sri Lanka's real scoring opportunity. But Keshav Maharaj is a damn good bowler. He's not going to give away anything. बिल्कुल केशव महाराज एक थिंकिंग बॉलर है और अब देखते हैं कि माकरम की कैप्टनसी क्या ऑलरेडी आप देख रहे हैं दोस्तों कि उनको भी कितना जिप मिल रहा है विकेट से और मुझे लगता है कि वो लेंथ उन्होंने समझ लिया है वहां उस लेंथ पे डालना है और वही लेंथ पे स्ट्रगल कर रहे हैं बाउंस को परखने के लिए एंड फाइनली एबल एक रिवर्स स्वीप पर जस्ट लुक एट द आउटफील्ड दोस्तों जान ही नहीं है इस आउटफील्ड में बॉल बाउंड्री पे जाने से पूरी तरीके से मना कर दी Yeah, as I mentioned, guys, I mean, you guys forget all your 190s and 200s for forever in this World Cup, at least for some time, because with the outfield conditions, expect it to be a very low scoring, interesting World Cup. So it's going to be like, as you saw Super Over today morning already, I think you'll see a lot of Super Overs. You might see last ball finishes a lot more, last over finishes a lot more, which is very good for the game. I think it's going to be a gripping World Cup in that regard. बिल्कुल बिल्कुल एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट कि आईसीसी ने यूएस में वर्ल्ड कप क्यों लाया क्योंकि उन्हें चाहिए कि अमेरिकन ऑडियंस को वो इंक्लूड करे और वो केटर करे एंड वो उनको कैप्चर करे
and Major League Cricket obviously has played a huge role, and आई थिंक मेजर लीग क्रिकेट ज्यादा लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो यूएस के टाइमिंग्स के हिसाब से चलते हैं, ना कि इंडियन टाइमिंग्स जहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स को इंडिया के टाइम जोन्स के हिसाब से, एशियन टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पे अपना मैच शेड्यूल करना है। पर जैसे कि एबल ने कहा, क्लोज गेम्स विल ओनली मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर, क्योंकि आपको वन साइडेड बोरिंग गेम देखने में तो मजा नहीं आएगा। आपको मजा आएगा कहाँ पे, जैसे कल के मैच में किसने एक्सपेक्ट किया था नामीबिया सुपर ओवर में जाएगा ये गेम। ओमान स्ट्रगल कर रहा था पहले इनिंग्स में, पर इट वेंट Yeah. सुपर, और यही होता है टी20 क्रिकेट का खासियत। I was एंड unfortunate I didn't catch up the game because it was an early morning game. By the time I woke up, the game was done. But yeah, it was it was pretty interesting to know the scores at least, and good to see, man. I mean that's what you're going to make people watch even the associate nations play, right? Otherwise, you're going to only watch these big boys play. एग्जैक्टली एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं दोस्तों इन एसोसिएट नेशन से, अंडरडॉग्स से, क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप में ऐसे ऐसी टीम्स आए, ऐसे ऐसे कंट्रीज खेल रहे हैं जो मतलब शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा कि क्रिकेट उनके देश में चल रहा भी होगा। एंड आप समझते हैं कि ये गेंद है पर सिर्फ एक सिंगल, और ये थोड़ा मैं मानता हूं कि सक्सेसफुल ओवर रहा श्रीलंका के लिए, क्योंकि दोनों बैटर्स ने अटैकिंग इंटेंट दिखाया, ना कि अपना विकेट बचाने के लिए या बस वहां पे खड़े रहने के लिए खेले। बाउंड्री भी आई उस ओवर में I तो think looking at this bounce and the outfield conditions, I don't know, man. It's not going to be easy for both of the teams. Let's be honest. Even if Sri Lanka scores 145, I'd still give them a chance. I mean, yeah, you can say it's low, etc., but and Sri Lanka balls the right length. I think they can win the game. बिल्कुल बिल्कुल, और आपको आप अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने भी इस पिच पर खेला नहीं है, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा कंडीशंस को परखने में, यूज टू होने में। वो पहली गेंद से आके अटैकिंग क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, और अगर खेल लिया तो उनको दाद देना पड़ेगा, यू विल हैव टू टॉक योर हैट ऑफ टू देम। पर देखते हैं। और एक और पेस पोलिंग मैं कहूंगा बैटरी के पार्ट आ गए आंट्रिक नौके, एंड आंट्रिक नौके फॉर्म में नहीं रहे पूरे आईपीएल में। लगता है कि वो बॉलिंग ही भूल गए, ऐसा लग रहा था आईपीएल में Yeah, कि उन्हें bowling ही नहीं आती है, सिर्फ वो बॉलिंग मशीन बन गए थे जो बैटर्स को सिर्फ इन द स्लॉट बॉल दे रहे थे या शॉर्ट बॉल दे रहे थे बाहर मारने के लिए। तो इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट। I agree, and I think even Andre Nokia will get something out of this wicket if he pitches it in the right areas. I would love to see him ball well because he's got a lot of potential. I think he really fits into this South African bowling unit as well. I mean, they've covered almost all bases. Even if you look at the bounce he's able to extract, I mean, it's crazy. It's crazy. दोस्तों यही यही बात हम कर रहे थे। मैंने लाइव पे क्वेश्चन डाला है कि विल श्रीलंका स्कोर 34 और मोर रन्स बाय द एंड ऑफ द 8th ओवर, पर जैसा हिसाब चल रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे विकेट मेडन भी आ सकता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि कंडीशन पूरी तरीके से पेस बॉलिंग के लिए बहुत सही है। और अब वनिंदु हसरंगा थोड़ा अपना मैच कर रहे होंगे कि भाई मैंने बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट का डिसीजन तो ले लिया है, पर मेरे बैटर्स तो जल्दी आ रहे हैं, किसी को टिकना ही है। Yeah, I was also a little surprised with that decision to bat first on a fresh wicket because T20 cricket, one bat, I would say one phase of the game can really destroy your innings. So 10 overs, you're scoring less than 40, 50, then it's really tough to catch up. So that's what I'm trying to say. Fresh wicket always give the new team a chance, like the opposition team to bat first. Then if the wicket gets better, then you can really bat well. Still a fresh wicket. I don't think the pitch is going to get any slower as such. दैट्स ट्रू। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि कंडीशंस कैसे प्ले करेंगे, तो आप प्रेफर करेंगे एज अ टीम टू बॉल फर्स्ट देन टू बैट फर्स्ट। I agree. I agree because even if you look at Sri Lanka, is also a spin heavy side. So I don't know if they went in with that particular thinking that what, maybe we'll get something on the second innings for spinners. That's up in the air and it's nowhere. But if you look, batters have barely have seen a shot out of the middle of the bat in this innings. बिल्कुल, हम देखते हैं दोस्तों, हम बाउंड्रीज गिन लेते हैं श्रीलंकन बल्लेबाजों की कि कितने बाउंड्रीज मारे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ESPN पे कि क्या स्टैट बता रहा है। आई थिंक उन्होंने Two मुश्किल से boundaries, right?
or one? एक ही बाउंड्री मारी या दो बाउंड्री मारी अभी तक? Two. जी, I'm not बिल्कुल। surprised. सिर्फ 2 बाउंड्री आई हैं दोस्तों, पर ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पूरी तरीके से फँसा दिया है। Well, it's a good shot from Kamindu Mendes. I mean, excellent shot. Oh, that's out. Oh, wow. The only shot which came out of the middle of the bat also is out. So I don't know, man. It's really hard. जी दोस्तों, ये पिच देखो और श्रीलंकन ड्रेसिंग रूम में थोड़ा टेंशन तो बढ़ गया होगा। सबके अब नाखून ना अपने मुँह में हो गए रहेंगे क्योंकि ये अगर हमने देखा था कि हमको लगा तो ये तो मिडल हो गया है। पर वो देखिए बैट के ऊपर ऊपर हाफ पे लगा है, ऊपरी। That's again the bounce, you know. That was, you could have played that shot if it was a subcontinental pitch. Could have got in the middle of the bat, would have gone all the way. But here, not sure, man. I mean, you need to have a lot of skill here. I mean, this is where a lot of players are going to be exposed. Like the so-called T20 superheroes, जायंट्स। I think they are going to be exposed a big time. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सहमत हूँ मैं आपकी बात से क्योंकि हमने देखा है कि फ्लैट पिचेस पे तो सब हीरो बनते हैं, पर ऐसे डिफिकल्ट पिचेस पे जहाँ पे बॉलर्स बॉल को लिटरली मेकिंग इट टॉक एज़ पर व्हाट दे वांट Yeah. ये बहुत मुश्किल होगा। I क्या think और India would be very tempted to go in with I mean, obviously, I think India play all three paces plus Hardik Pandya if it's a wicket like this. But India would be like, what if we had another pacer in the on the battery as well? Maybe what if there was like a Khalil Ahmed or the देखिए दोस्तों, battery? खुद आए हैं केवल कप्तान वनिंदु हसरंगा हैज़ प्रमोटेड हिमसेल्फ नंबर 4 पे और Which is good. ये अच्छा प्रमोशन कैप्टन ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन बता रहा है कि ठीक है बॉयज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पिच पे कैसे खेलना है मैं बताऊंगा कैसे अटैक करना है तो अ वेरी पॉजिटिव एंड अटैकिंग Yeah, मूव। as I mentioned, when the first wicket went, I would have loved to see Hasaranga or Angelo Mathews because you have to be slightly left field in these kind of wickets. You have to do something out of the ordinary to just get runs going. Because now you are like really a low score. It's not like it's a slow pitch; it's a quick wicket. You need to do something where you can score a lot of runs quickly. I mean, there's still a lot there for pacers. Even for spinners, they're getting that bounce. So you need to know, and there's a big ground. So you need to be very smart when it comes to operating. Don't go for these wide hoiks. Maybe try to tap the ball, take those doubles and singles, get the scorecard moving. Because now what Sri Lanka have done is they barely put bat to ball. एग्जैक्टली दे आर स्ट्रगलिंग एंड मैं कहना नहीं चाहता पर जरूर ऐसे लग रहा है कि श्रीलंकन बैटर्स को सीमिंग और बाउंसी कंडीशंस खेलना बिल्कुल नहीं आता और मैं मानता नहीं हूं कि ऐसा है। और ये देखिए दोस्तों, तीसरा विकेट तीसरा विकेट Uh, श्रीलंका ने खो दिया है, अपना कप्तान खो दिया है। अटैक करने का प्लान था पर अटैक सिर्फ इस वक्त कर रही है साउथ अफ्रीका। oh, 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 oh. 32 for 3, and South Africa all around Sri Lanka. But kind of expected the moment you saw that first over ball, this is like South Africa's territory. But once again, poor thinking to go at that ball. Maybe, yeah, you want to attack him, but he got that extra bounce. जी, मैं यही आपको मोमेंट्स पिक करने होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर हसरंगा कि अ, अब तक दिन अच्छा नहीं गया उनका। टॉस का जो डिसीजन था अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है कि सही डिसीजन था पर ये बहुत मुश्किल में अब श्रीलंका की टीम 3 विकेट तो अभी तक 50 रन भी नहीं मारे हैं। उन्होंने सिर्फ 32 रन्स मारे, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। I think South Africa should keep attacking. I mean, the best thing what South Africa can do is, ball Sri Lanka out under 100 and put them under tremendous pressure, going into the next innings. Just just do that. That's something which they can do.
What do you think? How much are you predicting? Oh, that's another wicket. एक और विकेट दोस्तों, क्या Oh my बात! God. यहाँ पे प्रोटियाज पूरे तरीके से ऑन फायर. Oh my God. What is happening दोस्तों, क्या हो रहा है? ये श्रीलंका पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है. साउथ अफ्रीका ऑन अ रोल. I think this is massive, massive blunder. Yeah. What could you have done? I mean, losing wickets to spin here on this wicket, that is criminal. It's okay you lose to pace bowlers because it's a pace friendly wicket, but losing wickets to spin, and you're a good spin playing team, right? Like that is kind of annoying me. What do you think, Alan? बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से कि हमें देखना है कि दोनों टीम्स के बीच में ना आपस में एक मुकाबला टक्कर का हो. ये ऐसा ना हो कि पूरे तरीके से बस एक टीम आके दूसरी टीम की तबाही मचा दे. पर इस वक्त तो यही हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली फॉर श्रीलंका, 4 विकेट आपने 10 ओवर के पहले खो दिया. ऑलमोस्ट आधी टीम आपकी जा चुकी है और डक आउट हो गए हैं इसी दौरान. Sri Lanka is here. One of the better batters for them. Hat trick ball as well. I think this is going to be very interesting. I mean, who expected this kind of start for a T20 World Cup? या डेफिनेटली, आई मीन दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट. अगर आप एक साउथ अफ्रीकन फैन हो और आप साउथ अफ्रीका हो, तो साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप्स हो या वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स हो, शुरुआत अच्छी नहीं की है हिस्टोरिकली. पर अभी तक शुरुआत तो बहुत सही है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआत अच्छी हो तो आपका अंत भी अच्छा ही होता है और सब अच्छा होता है. तो देखते हैं कि क्या इस गेम के एंड तक कौन सी टीम होगी विनिंग टीम. I agree. And I think South Africa has a terrific team. There's no doubt about it, as I mentioned. If you look at the team on the paper, they have all the goods to win the World Cup. But it's about how they capitalize on big moments and big days. And if the conditions also favor them, you never know, man. But yeah, they would love to play a lot of their games here in New York. If they go to West Indies, do they have enough goods to convert? Because they have not enjoyed batting on slow wickets as well. दिस Oh, दिस दोस्तों, ये मैच तो लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा. मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ही बैटिंग करेंगे श्रीलंका की वो टीम, तो I mean, मैच maybe तो look at जल्दी those खत्म हो shots which जाएगा. are being played, right? I mean, it's barely crossing the 30-yard circle. 9 overs, 36 runs, 4 wickets. Um, Interesting. I mean, great score in terms of a South African POV. But if you're a Sri Lankan fan, this is a nightmare for you. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा And the दोस्तों. recent times we've seen Sri Lanka get all out under 50s as well. Asia Cup, let it be, or those kind of games where the ball has done quite a bit. जी बिल्कुल, बहुत बहुत कब्जा किया है बॉल ने इस मैच में और श्रीलंकन बैटर्स बैट को बॉल ही नहीं लगा पा रहे. I also feel, in this wicket, what Sri Lanka are doing is also that they are just playing like they're playing in subcontinent, which is very wrong. Apply yourself according to conditions. I mean, that's why game awareness is such a big deal. Like even playing spinners like how they're playing in subcontinent, no, that doesn't work always. And that is where I think though they came to New York way early, they were not prepared for these kind of conditions. दैट्स ट्रू. वेरी वेरी फेयर पॉइंट. और जो हसरंगा ने कहा था गेम के स्टार्ट में कि हमें कंडीशन थोड़े एक्लेमेटाइज कर दिए हैं, पर यहाँ पे कुछ एक्लेमेटाइजेशन तो दिख नहीं रहा है. कुछ लग नहीं रहा है कि और ये हवा में गेंद है पर सिर्फ Nothing. ही जाएगा गेंद. Yeah. बाउंड्री के पास तो नहीं जाने वाला है ये. Yeah, it's been like a long time since we last saw a boundary. It feels like eternity already. एग्जैक्टली. एंड Um, ऐसी ऐसी फीलिंग आपको T20 क्रिकेट से ज्यादा आती नहीं है दोस्तों.
I agree, bro. Because there are two things to it, right? I mean, a lot of these T20 viewers of this day and age, we're so used to seeing Dhamaka, right? One and like 10 overs 100, 10 overs 140. I mean, usually we used to see scores into four in these kind of situations in IPL. So all of a sudden, these kind of scores, these kind of pitches, you're unsure as to whether is it a bad pitch, whether it's bad batting. I think it's a combination. I think it's bad batting more than bad pitch. Because Sri Lanka, as I mentioned, did not really apply at all. They just like, okay, you know what, we'll just keep doing what we know. That doesn't work in cricket, you know. You gotta respect the conditions. You gotta respect conditions, or else conditions will eat you up. वेरी वेल सेड, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपके बातों से। इम्पेशेंट क्रिकेट लग रहा है मुझे कि श्रीलंकन का बैटर्स ने खेला है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि आपके पास बाउंस और पेस को टैकल करने के लिए क्रिकेट या स्किल्स नहीं है, पर शायद वो मेंटल जो बैटल आप खेल रहे हो कि भाई मैं कब करूं अटैक, कब जाऊं अपने बैक फुट पे, कब आओ अपने फ्रंट फुट पे। I think if you look, Kushal Mendes, he's batting quite well here. Though he's got this skill, he's got a temperament, and what I'm seeing is he also tried to. He got some really good balls. Let's be honest. I mean, he's got some really good balls he missed. But at the same time, he was not reckless. You know, he didn't look like, you know what, I'll just throw away my wicket. He's looking to bide his time a little bit. That's what you need. Maybe that's the kind of wicket which you have. 10 overs 40 for that 4 wicket column is the worst. If it was 10 overs 49 for 1 wicket, it still would have been better. डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि फिर आपको As पता I है। speak about Kushal Mendes, I think he's hit one in the air and that's gone. ओ बहुत अच्छा कैच दोस्तों, ये बहुत Yeah, सही great catch, कैच, great catch. ग्रेट ग्रेट कैच। और आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन दोस्तों, क्या हो रहा है, ये क्या समझ नहीं आ रहा है कि साउथ अफ्रीका, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को जल्दी ड्रेसिंग रूम जाना है, क्योंकि उनको उनके शेफ ने बोल दिया कि भाई तुम अगर जल्दी आओगे तो तुम्हें गरम गरम खाना हम परोस देंगे, तुम वो सब बाकी भूल जाओ। एंड श्रीलंका जस्ट doesn't seem like they're into it at all today. I mean, this is a very interesting group as well. I think there's South Africa, Sri Lanka, and Netherlands as well, right? Yes sir, नेदरलैंड्स वो टीम जो साउथ अफ्रीका को हमेशा हरा ही देता है, कोई भी टूर्नामेंट And हो, एक Netherlands दो defeated Sri Lanka in the warm-up game. So if Netherlands are going to get these conditions, they're really going to enjoy it as well. So I think Sri Lanka is going to have a hard time, bro, if they're going to continue playing like this. बिल्कुल बिल्कुल I want to अगर see where the Netherlands versus Sri Lanka game is going to be played. Let me just check that out. I think Netherlands. Oh, there's also Bangladesh in that game in this group. So I don't really fancy Bangladesh as much. So Netherlands versus Sri Lanka will be played in Geo Stadium. Where is that? Oh, Darren Sammy Cricket Ground. It's in the West Indies. Okay. I thought that was a good chance for Netherlands if it was playing these conditions, but I'm not sure there. But yeah, having said that, I want to see where South Africa are playing the rest of their games. So South Africa playing today in here in Nassau County. Oh, the next game is in the same ground. Netherlands, South Africa in Nassau County Oval. Wow, you never know, bro. I mean you never know, और it just could be कि साउथ अफ्रीका फाइनली अपना बदला पूरा कर पाएगा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, बिकॉज वो 2022 का गेम दोस्तों किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार, Yeah, और and पाकिस्तान में nobody मुझे लगता है expected the 50 over World Cup. Even 2020, okay, you can still say the smaller teams have that chance. But the 50 over World Cup win of Netherlands was crazy. I mean, that was what caught people's attention. Like, okay, wait a minute, this team can do things. डेफिनेटली वो एंड आई रिमेंबर स्कॉट एडवर्ड्स द कैप्टन हिमसेल्फ प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, और बहुत बहुत मारा था। एंड वही हमें देखने मिला है कि साउथ अफ्रीका इन क्रंच मोमेंट्स हैज अनफॉर्चुनेटली not stepped up and performed.
देखते हैं कि क्या इस बार वो होगा कि नहीं। जैसे कि एबल ने कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है दोस्तों, टू फाइंड आउट कि कौन जाएगा टॉप 2 में, देखना होगा। एंड अभी बता रहे हैं कि एक ले लिया गया था, और ड्रिंक्स ब्रेक में आई थिंक बहुत एडवाइस मिला रहेगा श्रीलंकन बैटर्स को। ओहो, यहाँ पे टर्न भी ऑन द ऑफ एबल, it just doesn't look like a day for batters at all. Yeah, I mean, there's a lot of bounce in this wicket, so you need to know how to play spin on Australian conditions. And Maharaj has been born and brought up bowling in these conditions. He prefers bowling in these bouncy conditions. So altogether, the South Africa's home game. Definitely, I really definitely. do feel for Sri Lanka. Like they got conditions against them. Like literally, I really do feel for them. या यू डू, पर अगर आप वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कंडीशंस आपके फेवर में रहेंगे। यू नीड टू बी एबल टू प्ले एवरी कंडीशंस Like जो you kind of expect at least a flat wicket for a T20 game. Like because Australia, South Africa, we know okay, it's gonna be bouncy. It's like historically bouncy. New York, like nobody knows what it was gonna be, and you get this, and then Sri Lanka just falls into that pit against a mighty South African fast bowling unit. That's it. एंड अ पिच जो बहुत बहुत स्लो है, और जो बॉल को बाउंड्री से जाने के लिए रोक नहीं रहा है, खींच रहा है पीछे से। मुझे लग रहा है पिच कि अभी भी दोस्तों ज्यादा बाउंड्रीज नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि जितना बाउंड्री आया है ना, उतने विकेट्स आए हैं अब तक श्रीलंका के। I think Sri Lanka will play a very big role here. I think I remember him playing a very important knock for Sri Lanka against England in Perth in the last World Cup. He enjoys quite playing those bouncy knocks, bouncy track knocks. I think it's going to be interesting to see how he plays here. Because, बिल्कुल yeah, I बिल्कुल। mean, at this point, Sri Lanka can't do much. All what they can do is hope they score runs because there's no runs on the board. Just बिल्कुल 9 more overs left, guys. 9 ओवर बाकी है दोस्तों इसके बाद। और ये पॉइंट पे हम सोचते हैं कि टीम्स ऑलमोस्ट 3 डिजिट्स टच करेंगे, पर यहाँ पे तो इनके बाउंड्रीज भी सिर्फ 2 ही हुए हैं और विकेट 5, और रनआउट का यहाँ पे अपील पर अंदर आ चुके हैं बल्लेबाज। कोई मौका नहीं वहां पे रनआउट का। एंड एबल, सिर्फ Yeah. 2 बाउंड्रीज आए हैं श्रीलंका के टोटल अभी तक इनिंग्स में, और विकेट्स 5। दैट सम्स अप देयर डे। That's it. That's it. Oh, wow. My gosh. I think there'll be a boundary here. No, no, that's not even a boundary. Yeah, that could have been the sixth one. So yeah, end of 11 overs, 44 for 5, run rate of 4 at this point. Alan, I personally think, I think what Sri Lanka can do is just to play out the 20 overs from here. Because if they try to go at attack, I think they can also get all for another 10 runs. In all honesty, I don't think they have a great tail end batting to save the day for them. Even if they score runs, how much can they score against these conditions? So maybe bat it out, take the game to 17 overs and see what happens from there. फेयर फेयर फेयर, बिकॉज अगर मैं मानता हूँ कि दे नीड अ पीरियड ऑफ काम। थोड़ा आपको गेम को शांत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको साउथ अफ्रीका को बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, तुम अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, पर हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम थोड़ा सा कंट्रोल छीन सकते हैं। आप सिंगल डबल लो, स्ट्राइक रोटेट करो, डॉट बॉल्स का परसेंटेज आप कम करो, ताकि बॉलर्स भी थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाए। एंड 1 या 2 ओवर्स की बात होती है T20 क्रिकेट की, इम्पेशंस बहुत होते हैं इस गेम में। Yeah. I think here, not a bad idea to give in someone like Rabada an over, just maybe to clean up. और And they've gone Mathews will be a very important player. Mathews will like playing in these conditions because we've seen Mathews is technically very gifted. He was one of the most talented batters if you look in Sri Lanka's generation. So Mathews will hold. That's why I was very surprised why they didn't send Mathews in these conditions up top. It's not like he's a bad batter. He's possibly the technically the most gifted batter in this lineup. डेफिनेटली। और हमने देखा कि जो मैं भूल रहा हूँ कि कौन सी टीम थी वो, जी बिल्कुल, बांग्लादेश ने अपने वार्म अप गेम में हमारे खिलाफ ही Oh, that's another wicket.
Oh my God. Oh my God. It's दोस्तों आज श्रीलंका का दिन ही नहीं है, बिल्कुल भी उनका दिन नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है and Abel just excuse me, there's someone at the door so I'll have to get it. Yeah, sure. I'll just continue from here. So, yeah, just talking about which, guys, sixth wicket down, 6 विकेट गवा चुका है श्रीलंका यहाँ पे और पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। Like, हम सबको पता है कंडीशंस थोड़ा मुश्किल है बैटर्स के लिए, बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि जिस तरीके का पिच रहा है अब तक तो गेंद तो इधर-उधर उछला भी है और गेंद का स्विंग भी हुआ है। सो बहुत कुछ हो रहा है पिच में, पर श्रीलंका का बैटिंग भी काफ़ी साधारण रहा है अब तक तो। सो आई थिंक इट्स जस्ट बीन अ मिक्स ऑफ ऑर्डिनरी बैटिंग and bad applications, which has led to 45 for 6. I mean, you tell me, Alan, 45 for 6 is just not acceptable. बिल्कुल इट्स कोई भी टीम अगर आप एसोसिएट नेशन हो या फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन भी हो ये स्कोर तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते वी यू नो दिस इज बॉर्डरलाइन विलेज क्रिकेट आप जरूर कहेंगे एंड Borderline village cricket is a right way to put it up. अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के लिए उनके जो ओपनिंग बैटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया चरित असलंका एंजेलो मैथ्यूज जैसे बल्लेबाजों के पास अब ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू अटैक तो And अनफॉर्चुनेटली कुछ Dasun Shanaka has come at number 8 here. He's still got the pedigree to do well, but how much can he do is the question. जी दसुन शाना का दोस्तों श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे कुछ लंबे अरसे तक और बहुत अच्छी अच्छी पारियां भी खेली है उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच सेविंग नॉक्स भी खेली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप सभी को याद होगा तो एक बहुत बहुत अच्छा चेज किया था उन्होंने इन ऑस्ट्रेलिया टू विन श्रीलंका द गेम तो टैलेंट जरूर है इनके पास अब देखते हैं कि उस टैलेंट और उस एक्सपीरियंस का कितना इस्तेमाल करते हैं ये दोनों खिलाड़ी Yeah, so I'm just a little curious to know, how much can they score from here? Like, बिल्कुल even if you look at those shots, I mean, poor batting, man. Poor shots. I mean, if you look at all the wickets, it's not been some great ball which has got them out. Poor shots have really got them. बिल्कुल एंड ये वाला जो विकेट था मैं मानता हूँ कि असलंका ने अगर उसे ग्राउंडेड शॉट खेला रहता Yeah, I agree. I mean, ग्राउंडेड look for those gaps. I mean, I know you're under pressure. You want to get ahead of the balls right now. You want to go at a net run rate of at least 6. But it's just a far-fetched climb. Why do you have to throw away wickets? Because that's your biggest issue at this point. डेफिनेटली विकेट्स इन हैंड जरूर आपको रखने होते हैं ऐसे सिचुएशंस में पर यहाँ पे दे आर गिविंग द साउथ अफ्रीका देयर विकेट इन देयर हैंड्स I think there's still a lot of bounce in this wicket. The seam movement has considerably come down. That's also because the new ball, there's no more new ball. And I think that's where if Sri Lanka could have bided their time a little bit more, maybe they could have used these conditions well now at this point. डेफिनेटली और बैटिंग फर्स्ट का वो जो डिसीजन है Yeah, I agree. कैप्टन कोच और टीम मैनेजमेंट जरूर कहते रहे हैं कि भाई ये हम क्या कर दिया व्हाट हैव वी डन क्रिमिनल बैटिंग I think I can bring a Jansen for an over here. Not a bad idea. आई Maharaj is balling out here. I would think they would try another over Maharaj. Yeah, they are giving Maharaj one. एंड मैं इसके बाद रबाडा को लेके आऊंगा जैसे कि एबिल ने कहा था कि रबाडा को लेके आके उन्हें फिनिश कर देना चाहिए बिकॉज अगेन वो ऐसे एक बॉलर है जो बाउंस बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेंगे और बैटर्स को और तकलीफ देंगे अभी भी बाउंस जरूर है स्विंग नहीं है पिच में क्योंकि वो न्यू बॉल का जो लैकर और शाइन है जैसे एबिल ने कहा हट गया है और श्रीलंकन बैटर से भी जो शाइन और जो क्लास था इस मैच में वो भी हट चुका है 47 for 6 after 12.2 overs. How much can they score? That, Ideally. that is $1 million question. I mean, if you think from a Sri Lankan perspective, you think you can score 100 here?
you'll be happy with 100. Definitely, I think अगर तीन फिगर क्रॉस कर लिया तो साइकोलॉजिकली एडवांटेज मिलेगा श्रीलंका को, और कुछ नहीं, बिकॉज ये जो बैटिंग टीम है साउथ अफ्रीका की, मैं मानता हूँ कि अभी उनके सामने टारगेट होगा तो वो बहुत आराम से खेलेंगे। अगर एक दो विकेट भी खो दिए तो मैं मानता नहीं हूँ कि ओ एक्सीलेंट एक्सीलेंट बॉलिंग वहां पे दोस्तों, अपनी बॉलिंग पे फील्ड किया अच्छे से, और साउथ अफ्रीका एबल looks completely switched on और Well, the game first six of the match. I mean, brilliant from Mathews. फाइनली दोस्तों द फर्स्ट सिक्स, ये पहला छक्का है इस गेम का। कैन यू बिलीव दैट माय फ्रेंड्स, इट्स द 13th ओवर ऑफ द गेम। 13वें ओवर में हमको पहला छक्का मिल रहा है गेम का। क्या ये T20 क्रिकेट है कि क्या ये कुछ अलग ही फॉर्मेट चल रहा है यहाँ पे? I agree, but see again, Mathews is the most skilled batter in this team. He's someone who can play spin well, who can bat against even pace. So why didn't you not send him at number 3, number 4? Is the thing which you have to answer for yourself. Why do you have to keep him at number 7? Like that's just stupid decision making, nothing else. डेफिनेटली आपने आपने वन आप कैप्टन हो वनिंदु हसनंगा ने खुद को प्रमोट किया, और मैं नहीं मानता हूँ कि वो अच्छा डिसीजन था। इवन अगर वो मार भी लेते 20-30 रन, तब भी आपकी बेस्ट बैटर्स को आपको गेम में जल्दी लेके आना है। आपको साउथ अफ्रीका को I understand. I mean, what I wanted was maybe for today. I mean, looking at the conditions, who's your most technically gifted batter? Here, you wouldn't have done with sloggers. You needed someone who can buy time out, who can really do well in tough conditions, and that's Angelo Mathews is a bona fide test player. So why didn't you send him? यस सम क्वेश्चनेबल डिसीजन मेकिंग दोस्तों। श्रीलंकन टी क्रिकेट की जो टीम मैनेजमेंट है डेफिनेटली सोचते रहेंगे कि भाई ये हमने क्या कर दिया। आई थिंक सारे डिसीजंस जो भी लिए उन्होंने गलत, और यानसन इज बैक इनटू द अटैक एबल मूव दैट यू वांटेड, और देखते हैं कि क्या अब इनका जो हाइट है कितना तंग करेगा। Oh, that's up in the air. Just a single here. और बच गए यहाँ पे शानका एक और बार फिर से दोस्तों। कोई आइडिया नहीं बाउंस का, कोई जवाब नहीं बाउंस का, बस अपना लक को राइड किया और दूसरे एंड पर पहुंच गए शानका। एक रन इनटू दैट टैली, 50 रन क्रॉस कर दिए श्रीलंका ने आफ्टर 79 डिलीवरीज, ऑलमोस्ट 78-79 डिलीवरीज के बाद 50 रन क्रॉस किया है, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन श्रीलंका के लिए इस गेम में। Oh yeah. I mean, if you look at the field which is set for Yanton as well, he's just looking to ball short at them. I mean, you're only going to get short balls. So I think Sri Lanka should be ready for that. I think he's डेफिनेटली going to double bluff. There's not a single player down the ground. Everybody's on the square. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड अगर आपको दिख रहा है कि फील्ड प्रीमेडिटेटेड फील्ड इतना इतना सेट है फॉर दैट वन पर्टिकुलर डिलीवरी, तो एज अ बैटर यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी रेडी। तो आपके दिमाग में मल्टीपल शॉट्स आपको ओपन रखने होंगे। देखते हैं कि शानका और मैथ्यूज का क्या जवाब होता है। I mean, pitch has gotten better for batting for sure. If you look at the last 2 to 3 overs, I mean, it's a lot better. But yeah, obviously, by now, you're just doing damage control. You just landed yourself in a big hole and you're just trying to pull yourself out of it. You can't do anything much from here. जी बिल्कुल बिल्कुल If you're a सही Sri कहा। Lankan fan, you want to know how to win this game, I think 120 at least and hope to ball really well. बिल्कुल आपको उम्मीद अगर चाहिए एज अ श्रीलंकन फैन, वो आपको 120 That's a 6 130 again, top edge and a 6. So finally some runs coming through. और ये देखिए दोस्तों, हमने देखा है कि चरित असलंका ने बॉल मिडिल किया सीधा फील्डर के हाथ में, पर लगता है कि दिस इज द अदर एंड जहां पे लेग साइड बाउंड्री छोटी है फॉर द राइट हैंडर्स। अच्छा वहां पे रिजल्ट श्रीलंका क्रिकेट के लिए 6 रन, और दो छक्के आ चुके हैं दोस्तों पहले 10 ओवर में, सिर्फ दो बाउंड्री, पर उसके बाद सिर्फ 4 ओवर में दो सिक्सेस। वो फॉर्चून बदल रहे हैं श्रीलंका के। Yeah, I mean that was not timed anywhere, but yeah, you'll take it. Definitely, you will take anything as a Sri Lankan fan. But
here once again, I think what Shanaka can do is, just hit out, because there's no point. I mean, you're either going to lose by a big margin here or get out for nothing. So what's better? Just give it a try, swing the bat. I thought Aslanka was batting. I thought, what, maybe they can just build an innings, take the game deep. But here, 14 overs, 61. What more can you do? Like, you जी, need मैं to score मानता हूँ this one. कि शायद ना उनके दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि हम 20 के 20 ओवर तो खेल के ही जाएँगे। ऐसा हम कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर सकते कि हम पूरे ओवर भी ना खेलें। व्हाट डू यू थिंक? क्या वो एक माइंडसेट रह सकता है कि 20 ओवर तो खेल के ही जाएँगे। देखते हैं रन्स कितने बनते हैं, पर हम सर्वाइव Yeah, करेंगे। that is possibly a possible way to look into things. But see, it's a T20 game. You need to know that you need to score runs at least. At least 6 runs an over. I'm not asking for something at 8 or 9s. But if you're going to give a target of 100, 105, it's not good enough. You have to give something on 125s to 130s to at least stay relevant. So that I'm talking about is 10 runs per over from here on. See, in T20 cricket, we've seen crazy things happen, right? 6 overs, you can even score 100, but which is quite unlikely here. So I think 6 overs, 60 runs is a possibility. I mean, target those overs, go for it. Let's look at 120, 125 as the final score. Then let's see how you ball. See, that's another great shot from Mathews. That's another six here. जी, बिल्कुल और फाइनली मैथ्यूज़ बता रहे हैं कि उनको ऊपर ना खिलाने का डिसीजन कितना गलत था दोस्तों। 3 छक्के आ चुके हैं ऑलरेडी। Mathews is class, man. I mean, there's no denying the fact he was in a pedigree as Sangakkara Jayawardena as well, right? You took Mathews, Sangakkara Jayawardena. So it's kind of weird that you don't trust him enough. Yeah, I'm honestly perplexed कि आपके सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को क्यों मौका नहीं देना चाहोगे और हवा में गेंद बच गए यहाँ पे एंड एबल लगता है कि अभी वो जो 100 रन का टारगेट था शायद रीच कर पाएंगे। Obviously, they will be able to reach 100, but again, as I like to reiterate that they'll have to look for a 120 because, see, score 120, then you leave it to your bowling to do a little bit of job. If you're scoring 100, then you're looking for miracles. It's not like today morning you saw 108 being defended. It's not going to happen against South African team. In all honesty, South Africa has got a much potent batting attack than a lot of teams in this World Cup. So you'll have to score the runs. 6 runs and over is always an interesting thing. And now you're seeing the pitch not do a lot more. It's like the pitch has gotten, it's dry, the sun is out, it's drying out, the moisture is off, and you can score runs. So I think come the second innings, the batting is going to be slightly more easier. बिल्कुल, बिल्कुल अगर हम देखेंगे यही बॉल दोस्तों जो शानखा ने खेला है रबाडा का गली और पॉइंट के पास वो बाउंस एक्स्ट्रा नहीं ज़िप करके नहीं आई, उनके बैट पे मिडल करके आई। कंफर्टेबली खेला उन्होंने उस बॉल को और एबल यही बता रहे हैं कि कैसे थोड़े Out. कंडीशन अब Oh my ईज़ अप हो gosh. गए एंड ये देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे शानका के बारे में, रबाडा ने आके स्टंप्स का कबाड़ा कर दिया और मैथ्यूज़ विल बी लाइक कि ब्रो आई जस्ट नीड समवन कोई एक मेरे साथ टिक जाओ, मैं टारगेट बना दूँगा। कोई एक मेरे साथ टिक जाओ बस। That was poor shot again. You saw what Matthews did. Why do you have to move away from the stump and play that against Robada? Bro, that. This is immature cricket, nothing else. बिल्कुल, बिल्कुल इमैच्योर क्रिकेट दोस्तों, उस वाइल्ड स्लॉग आपने लेंथ को ना परखा, ना देखा। 68 for 7, guys. Almost 15 overs now. I think if they get one more wicket, they're going to be balled out for less than 100. How much can Matthews do alone is a question here.
यस, अकेले एक वन मैन आर्मी कितना करेगा अपने टीम के लिए. Tikshana can hold on the bat for some time, but can he in these conditions? Again, it's not a 50-over game. It's just a 20-20 game. So और वहां पे देखिए तीक्षणा ने कितना सटीक डिफेंस किया दोस्तों. बता रहे हैं अपने श्रीलंकन बैटर्स को, कैप्टन को, कि कैप्सी मुझे भी प्रमोट कर सकते हो आप. yeah, I agree. He's a solid batter. I mean, he can handle himself with the bat, 100%. But I don't know, the runs is a question here. You can play out 5 overs, but you need to score those runs, 15 overs, 68 for 7 here, 5 overs remaining. If it goes run a ball, they can score close to 100. दिस इज सम इंसेन बॉलिंग दोस्तों. क्या मतलब, जैसे ना शायद टीम्स जो वेस्ट इंडीज ऑफ द ओजी ओल्डन डेज थे, जैसे उनके सामने कैसे सारे बैटर्स हिचकिचाते हैं, डक करते थे, कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है. श्रीलंकन बैटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वाइड स्लॉग कर रहे हैं. And also, this also shows how technically awful are the modern day batters. जी बिल्कुल Like if the बिल्कुल ball सही. starts doing something, you forget how to bat. Give something for the bowlers, and they're nowhere in the game. The batters. No disrespect, but IPL has really spoiled a lot of us. I don't Oh, think we should. That's why I keep saying, we keep judging players based on IPL solely. But how are they going to do in a tough condition? Like, how is so an ex player who you glorify in IPL going to do on condition where the ball is going to move around a little bit? बिल्कुल. और हमने देखा था ये सेम चीज शिवम दुबे के साथ भी हुई है कि उन्होंने आईपीएल में तो तहस-नहस मचा दिया था. स्पिन बैशर उनको कहा गया था. पर जब से उनका सिलेक्शन हुआ है, तब से वो कुछ बैश नहीं कर पाए, कुछ स्मैश नहीं कर पाए. बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपने वार्म अप गेम में भी. बॉलिंग उन्होंने ज़रूर अच्छी की होगी, पर बैटिंग वही एबल कह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रैंचाइज क्रिकेट या लीग क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वर्ल्ड्स अपार्ट, द टू थिंग. I agree. And not just that, I mean, if you put Shivam Dubey in a pitch like this, I swear, I don't know, there's nothing to expect out of him. I mean, I've seen even maybe Rinku Singh would have been a good choice in these kind of wickets, because he's been there and done that. Especially in South Africa, I think he played a good knock. India went to play a T20 series there. But Shivam Dubey in bouncy conditions, bad choice. यप, दैट्स अ फेयर पॉइंट. क्योंकि शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी है जो ज़्यादा अपने पैर हिलाते नहीं है. अपने जो अपना जो बेस है उसको एकदम स्टैच्यू जैसे खड़ा रखते हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं. No disrespect, but Shivam Dubey is a good player of flat wickets. बिल्कुल, Once बिल्कुल. the ball अभी moves तक around a little bit, he's nowhere there in the game. बिल्कुल, अभी तक उन्होंने अपने स्किल्स सारे कंडीशंस को कैटर करने के लिए तो नहीं अभी तक बनाए हैं. एंड दैट्स नॉट टू से कि वो आगे जाके नहीं कर सकते हैं. एवरी वन ऑफ अस वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. अगर शिवम दुबे आगे जाके या किसी टूर्नामेंट में वो Ooh, that's करके another दिखाते हैं. wicket. Mathews is also departed. Nokia has 4 for here in New York. And Sri Lanka has 70 for 8. 70 for 8. My God. It's like the South Africans ate them for breakfast, lunch, and dinner, dosto. This is just abysmal. Yeah, they are loving the Sri Lankan delicacy for sure. Yeah, and like I was saying, जैसे मैं बोल रहा था दोस्तों कि ये क्या ये what is happening कि I am unfortunately for Matthews कि उनको अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, because he is the last recognized batter आपकी टीम में. पर सामने आपकी इतनी कॉन्फिडेंट प्रोटियास की जो टीम है, एंड व्हेन आपकी टीम ने 7 विकेट ले लिए हैं, 7 विकेट ले लिए हैं, और कॉन्फिडेंस तो उनका स्काई हाई होगा. I think Nokia should look for a fifer here.
डेफिनेटली एंड इमेजिन T20 में फाइफर दोस्तों आसान नहीं होता है, बहुत कम बॉलर्स के पास है फाइफर्स एंड एक सिक्सर्स भी इन T20 क्रिकेट बहुत कम है, शायद युजवेंद्र चहल और एक दो और खिलाड़ी है जिनके पास है, पर फाइफर्स इन T20 क्रिकेट गेम्स। Ooh, he went for the Yorker. Patirana kept him out. जी, पतिराना जानते हैं कि यॉर्कर को कैसे खेलते हैं, कुछ डालते भी वही है ना पूरा टाइम, उन्होंने मेरे को बस बैट यहाँ पे। But yeah, guys, I mean, this is just an Asian team getting exposed in bouncy conditions. यस, कंप्लीटली एक्सपोज मैं कहूंगा श्रीलंका नॉट द स्टार्ट दैट दे वुड हैव वांटेड। आपको शुभ आरंभ करना है, पर इनका आरंभ तो शुभ नहीं रहा बिल्कुल भी शुभ। I would have loved to have seen a Mohammad Shami ball in these kind of wickets. ओ माय गॉड, वुड हैव बीन एब्सोल्यूट ड्रीम। Yeah, unfortunately, I mean, with the seam movement there, everything. If he was there in Team India, I would have really loved it. Oh, missed out on a fifer here, but yeah, take it. 4 for 7. Incredible bowling. 4 for 7 in 4 overs. He's the same guy who went at 12 runs an over in IPL. So that's how time changes, guys. International cricket is a different ball game. So don't judge a एग्जैक्टली, player by IPL. बिल्कुल सही कहा एबिल ने। हम बात कर रहे थे कि हॉकी ने आईपीएल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर अपने कंट्री के लिए खेलना, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड टूर्नामेंट है, जहां मैटर करता है द मोस्ट। ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट भी मैटर करता है जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक टीम को, पर बहुत अच्छा ये कमबैक एंड नोकिया बहुत खुश होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टर उनके लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। Diksha is showing some solid defense here. 70 for 8. I mean, how much can they score? They barely they'll score 100, but at least they would want to survive. Nokia is fast, man. He's super fast. ओ या ही इज रियली रियली फास्ट एंड दिखा रहे हैं नेट्स में। Ooh, that's a good कितना swing पेस डाल from रहे हैं। Sri Lanka. Would feel that this is a game they want to get out of the way first up. Like, they don't want to repeat it, and they'll also be very aware that they can't afford to mess up after this game as well. ओ या दैट्स वेरी वेल सेड, क्योंकि भाई अभी अगर तुम इतना हैवी लॉस अपने पहले ही गेम में ले रहे हो, तो मतलब कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, आपका मोरल भी थोड़ा लो रहेगा, मोरल बहुत डाउन रहेगा श्रीलंकन प्लेयर्स का। I think one thing which South Africa will be very happy about is, you know what? Let's get that big win first up with an NRR up top. Then let's just chill on top of the table. डेफिनेटली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का लक भी ना वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में दोस्तों हमें पता है कि उनके साथ ना कुछ भी हो जाता है। Yeah, because the moment you go to West Indies, you don't know about the weather and stuff. It's island nations, you can have those bad weather come into play, couple of washouts here. And even in America, you know about these storms and everything which happens there. So yeah, you would want to get those big wins and settle up top. डेफिनेटली डेफिनेटली, आपने बहुत सही बात कही क्योंकि हमें हमने देखा है कि देयर ओह दैट बॉल आल्सो देयर वाज मूवमेंट ऑन द ऑफर इस वक्त भी पिच में, मतलब ये पिच कितना बॉलर फ्रेंडली है। तहस नहस मचा दिया यहाँ सारे Ooh. साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने। Bartman is ball outstandingly well here. भाई अगर ये मेडन ओवर हो गया, विकेट भी नहीं मिला पर मेडन ओवर भी हो गया, तो T20 क्रिकेट में भाई मेडन नहीं होते हैं ज्यादा। अगर मेडन डाला है आपने तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट एज गुड एज अ 50, मैं कहूंगा। T20 क्रिकेट में बहुत बहुत स्किल लगता है इसके लिए। I agree, bro. I mean, ooh,
think that's a wide. Yeah, I mean, Barton has bowled exceedingly well. I mean, the first wicket he picked up, the first over he bowled, outstanding. So far, he's had a very good day. बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों और I मुझे think लगता है Sri Lanka as well. I mean, for them, when they come out to ball, they have to ball with a lot of heart here. I mean, they'll have to know that, you know what, though we'll only have this many runs to play with, but let's just give a fight. Because if you're going to give up early, the game is also going to get off early. Take the game deep. You never know. What if you're able to get South Africa 5 down quite quickly? Because South Africa will also know the pitch isn't that easy because with a new ball, again, you're going to get something out of the wicket. So Shara is going to play a big part. I would have loved to see a Dushmanta Chamira on this wicket, but it's fun. It's I don't know why he's not playing today. या नो आइडिया माई सेल्फ के दुशांता चमीरा जो पेस आउट एंड आउट पेस यार बॉलर है एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर श्रीलंका मिस आउट और ये आईपीएल नहीं है कि आप इम्पैक्ट प्लेयर लाके आप रिप्लेस कर दो Yeah. बट जरूर जरूर अब ये देखना है कि पिच स्लो भी है तो तीक्ष्णा कैसे परफॉर्म करते हैं इस पिच पे क्या स्पिनर्स इनटू द गेम जल्दी आ जाएंगे अगर उन्होंने मैं मानता हूँ कि अगर उन्होंने स्पिन इंट्रोड्यूस किया जल्दी तो साउथ अफ्रीका के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा ना कि श्रीलंका के लिए From what I can see as well, just looking at how South Africa is bowled here, one thing they really used well today is the short ball. They've really put pressure on Sri Lanka with the short ball. They knew Sri Lankans are not the best of pullers. Put them on the back foot, like how you would do an Asian team. Well, that's up in the air. It's way up in the air, and that's out. That's the ninth wicket to fall. 71 for 9 here. I think we're going to have an early close of play before we win the 20th over. So, I mean, great captaincy from Aiden Markram as well. I mean, Aiden Markram is a terrific captain, guys. He's yep. won 2 SA20s. He's won the Under-19 World Cup with South Africa. I mean, if you ask me the best captain they've had, it's obviously going to be Aiden Markram. Temba Bauma was just a namesake. This guy is always destined to be the captain. And he's got a good level-headed shoulder. He is tactically pretty good as well. डेफिनेटली अगर दोस्तों आपको याद रहेगा 2018 में हम एक ओडीआई सीरीज खेलने गए थे वहां पे जहां हमने 6 वनडेज खेले थे और उस ओडीआई सीरीज में एडन मार्करम वाज द कैप्टन बिकॉज शायद उनके जो मेन कैप्टन थे उस टाइम पे फाफ डू प्लेसी इंजर्ड हो गए थे तो एडन मार्करम वेरी यंग एडन मार्करम शायद 22 या 23 साल के ही थे और उनको तभी कैप्टनसी दे दिया गया था एंड बहुत पैरेलल ड्रॉ किए गए थे टू ग्रेम स्मिथ एंड एडन मार्करम एंड he was not able to convert those same successes जैसे कि legendary captain Graham Smith, one of my all-time favorite captains and lucky enough to even watch him play. पर जी बिल्कुल सही कहा एबिल ने a very very good captain from his early days itself दिखाया उन्होंने अपने leadership skills और जब आपके कैबिनेट में ट्रॉफी भी होती है तो थोड़ा आपका पेडिग्री भी बढ़ जाता है. I agree. I mean, I was very surprised when he was sacked from the Sunrisers Hyderabad, and they'd have a reason to say that because they played the finals this year, anyways. But from a South African pre-OV, I think he's one for the future. I mean, you invest in him. If South Africa ever has to get an ICC trophy, and I think he's the right man to lead you to an ICC trophy because he's got that habit of winning trophies. I understand it's not a South African trophy yet. He's got an under-19 World Cup. That's the only ICC trophy South Africa has gotten among all age groups. So that's a big deal, right? He's come into the glory as an ICC under-19 World Cup winning captain. And to add to which, you've got two back-to-back trophy in your franchise league. You are considered as a technically very solid batter as well. So I think from a South African POE, I personally think Aiden Markram is the right man to be invested upon. And let's see if he delivers. And he's captained the team beautifully here today. He's mixed and matched with fast bowlers and spinner in Keshav Maharaj really well. He used him well, brought in the right. He gave confidence to Andre Nokia, bringing him when there were new batters. So I mean that's good man management as well. बिल्कुल और दोस्तों आखिरी बॉल ही ओवर का क्या हमें एक विकेट मेडन देखने मिलेगा जी बिल्कुल मिलने वाला है मुझे लग रहा है विकेट मेडन का यहाँ पे मौका देखते हैं रबाडा
71 for 9, 18 overs. We're looking at this used to be power play scores in IPL, Alan. टीम्स ने पावर प्ले में इससे ज्यादा रन बनाए. आई मीन आई रिमेम्बर सनराइजर्स ने शायद 100 120 6 ओवर में. एंड मतलब आप यही बात है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट और मतलब IPL अगेन कंडीशंस भी कमिंग इनटू प्ले. साउथ अफ्रीका जस्ट हैड आंसर्स फॉर एवरीथिंग. क्या बॉलिंग डिस्प्ले है, मतलब मजा आ गया एज अ बॉलर. बट एज अ T20 क्रिकेट फैन आप बोलेंगे कि यार श्रीलंका ये तो नहीं करना था आपको. Yeah, I agree. I mean, as a T20 fan, you're like, oh my gosh, I wanted to see some sixers. I came to watch some sixers and I barely got to see anything. How much are you predicting South Africa chases down by? I think they'll chase it in inside 10 overs. 10 overs. Okay. So that's a good one. 10 Yeah, overs. I would say a bold 6, call. 7. I would say 8 overs. Okay, 8 overs. That's even bolder than mine. देखते हैं कि क्या श्रीलंकन बॉलर्स हमारे इन दोनों प्रेडिक्शंस को पर्सनली लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वेरी क्लोज गेम, या साउथ अफ्रीका को थोड़ा स्केयर देते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर. बट पहले देखते हैं कि इनका फाइनल टैली या टोटल कहां तक जाएगा. क्या लग रहा है दोस्तों आपको? यूट्यूब पे जो भी जुड़ा है हमारे साथ, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं लाइव. 80. 80 रन्स एबल ने यहाँ पे, और मैं मानता हूँ कि At max 80. At max, okay. At max 80. All right. At max 80 का है एबल ने. मैं कहूंगा at max 76 रन बनेंगे इस टीम पे. Now let's see who gets the precise prediction right. पर ये सारे prediction fans बहुत नाराज रहेंगे दोस्तों. ये क्या है. सब फैंस घर पे जो बैठ रहे हैं मैच देखते हैं बोलते रहे हैं कि ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, और वहां पे शॉट लगाने की कोशिश एंड दैट्स अ 4, अ बाउंड्री. कैन यू बिलीव इट दोस्तों? महेश तीक्षणा ने बाउंड्री मारा है. जाने जाते हैं कि बैट पकड़ सकते हैं, और पकड़ के उन्होंने खींचा भी है एक 4 रन के लिए. व्हाट अ वंडरफुल शॉट. और अब उन्होंने बोला है कि एलन तूने 77 बोला है ना, तो तेरे को देख अभी तेरी 77 कैसे दिखाता हूं मैं. वेरी गुड शॉट. थोड़ा सा रिस्पाइट श्रीलंकन के बॉलर्स को, थोड़ा वहां पे फैंस को उम्मीद और फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका. और देखिए किसी भी बॉलर को ना मार खाने को पसंद नहीं आता है. बाउंड्री खाने के बाद क्या रिप्लाई आया, बाउंसर, वो भी तगड़ा बाउंसर, ऑलमोस्ट सर के ऊपर से जाने वाला. गुड रिप्लाई. फास्ट बॉलर्स का यही होता है हाल. तो दोस्तों हमें लगा था कि मैच तो मजा आएगा, हाई स्कोरिंग नहीं पर गुड स्कोरिंग रहेगा. पर यहाँ पे दी ओनली गुड स्कोर इज फॉर द बॉलर्स. यहाँ पे बॉलर्स का ही टैली है. आंड्रिक नोकिया ने 4 विकेट ले लिए. बार्टमैन ने अपने डेब्यू के पहले ही गेंद पे विकेट ले लिया, और रबाडा ने विकेट मेडन भी कर दिया. तो ये पूरे के पूरे तरीके से बॉलर का दिन रहा है अब तक. Yeah, I mean, to be honest, you're right, man. I mean, now 75 is what they've gotten. क्या 80 पे जाके थोड़ा सा, हाँ, शायद आखिरी के 2-3 गेंदों में अच्छा बाउंड्री मारा या शॉट्स खेले तो थोड़ा मोमेंटम लेके जाओगे. और हाँ यार, कितना मोमेंटम मिलेगा 80 रन के स्कोर में ब्रो. देखिए इतना मोमेंटम तो नहीं मिलेगा कि आप जीत जाएंगे. आउट that's out. नो. जी देखिए दोस्तों, मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, 77 से ज़्यादा नहीं बनेंगे इस टीम से, और वो प्रेडिक्शन सही निकला. इसी के लिए हम बैठते हैं साथ इस लाइव सेशन में आपको बताने के लिए कि आपको
क्या करना है, किस मोमेंट पे क्या होने वाला है। हम ये कॉन्वर्सेशन ये बहुत मैं कहूँगा एक अजीबो-गरीब इनिंग्स रहा है। 70 के लिए आप ऑल आउट 77 रन्स के लिए आप ऑल आउट हो रहे हैं और 77 रन्स ही मेरा प्रेडिक्शन था। तो उस प्रेडिक्शन के लिए मैं पीठ पे थपथपा कहूँगा। पर यहाँ पे कोई ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है इस इनिंग्स में श्रीलंका का दोस्तों। तो श्रीलंका टू विन द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगर मैं अभी इस टीम पे डाल देता हूँ वो एक फाइनल आपके लिए, इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कह लूँ इस लाइव सेशन में। श्रीलंका टू विन द मैच तो इन्हीं के हाथ में है। श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली जस्ट नॉट अ गुड डे इन फॉर देम। तो दोस्तों ये था हमारा लाइव सेशन फर्स्ट इनिंग्स का। एक लाइव सेशन जो 1.5 घंटा चला ज़रूर है, पर श्रीलंका की इनिंग्स नहीं चली, 20 ओवर कंप्लीट भी नहीं हुए और 10 उनके विकेट गिर गए। 77 उन्होंने बनाए, 78 रन्स का टारगेट, और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 10 ओवर के अंदर मार लेगी साउथ अफ्रीका की ये टीम, और एबल ने कहा था कि 8 ओवर में ही चेस कर लेगी श्रीलंका को ये टारगेट। तो देखते हैं, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेगा सेकेंड इनिंग्स के लाइव सेशन में जो थोड़ी देर में चालू होने वाला है। तो तब तक के लिए मैं आपको कहता हूँ अलविदा, अगले ही लाइव सेशन में मिलते हैं। आप 22 टास्क पे बने रहिए, स्टैट फैंटेसी का जो कॉन्टेस्ट है आप खेलते रहिए और रिवॉर्ड्स पाते रहिए, और हम आपके साथ जुड़ेंगे ऐसे ही मैचेस में, लाइव सेशन, लाइव कमेंट्री। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो देख रहे हैं आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा जो लाइव सेशन है 22 टास्क पे, और यूट्यूब पे आप अगर हो हमारे साथ तो हमारे वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा और कमेंट्स पे भी बता दीजिएगा कि आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आपको कहता हूँ गुड बाय एंड मिलते हैं एक और लाइव सेशन में।